Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to discuss one of the most important function of commercial bank is money creation or credit creation. Okay, so as we have already discussed the many other functions of primary and secondary functions of commercial banks, but this topic is very important because sometimes it happens here. You will get a numerical on money creation or credit creation or money multiplier. Okay, so here, what you can say, first we will discuss from the book, and then I'm going to give you some few points on the notes. Okay, so if the question comes, then you can just write those notes as a summary. Okay, as a summary, I will just give you. So it will just give you, it will help you in scoring the full marks. Okay, तो अगर आपको नहीं समझ में आता, you just go through the notes and then you can easily score well. Okay, so first of all, here what they are saying, commercial banks receive deposits from the public. We all know that is commercial banks gets the money or receive the money from the public as deposits and use these deposits to give loans. Okay, and जो भी हम deposit करते हैं उसी को वो लोन की तरह आगे यूज कर लेते हैं. However, loans offered are many times more than the deposits. Means actual deposit जो होता है उससे कहीं ज्यादा गुना वो लोन के थ्रू जो है अपना money creation करते हैं. This function of bank is known as the money creation. Okay, so in simple word, this is the meaning of the money creation. Now, money creation or credit creation, it means what? Through the process of money creation, commercial banks are able to create credit. Credit means money, which is in far excess of the initial or primary deposits. For example, if I have just deposited 1000 rupees in the commercial bank, okay, then uska kya hoga? That is some percentage, that is LRR, that is legal reserve requirement, has to be kept in the as a reserve in the bank. Okay, so for example 1000 पे 20% अगर आपका legal reserve है, okay, so that means 200 is to be kept as a reserve and rest, that is 800, is again what it is used as loan. Okay, it is being provided as a loan. तो इस तरह क्या होगा, एक आपका ये चेन चलती रहेगी. Okay, now what we're going to discuss here, that is this process can be better understood by making two assumptions. अब इस money creation के दो assumptions हमें मान के चलने हैं. That is the entire commercial banking system is one unit and is termed as bank. यानी कि सिर्फ बैंक से यहाँ पे work कर रहे हैं. Okay, entire commercial system is one unit. Okay, then all receipts and payments in the economy are routed through the banks. ठीक है, जितना भी आपका receipts and payments हो रहा है are done only through the banks. That is all payments are made through checks, no cash. Okay, no cash. Please just make it a point here. That is, there is no or cashless economy and no cash leakage is there. People deposit the entire amount in, you can say, the banks. Okay, so these are the two assumptions you have to keep in mind. Okay, then the deposits held by banks are used for giving loans. So जो भी हम deposit करते हैं वो बैंक पूरा पूरा use कर लेता है as the loans. Okay, commercial banks grant loan to the borrower by opening a deposit account in the name of the borrower and credit the loan amount in this account. Okay, so whatever the deposits we made, the बैंक क्या करता है, एक आपका जो रिजर्व का अमाउंट है, that is जो भी परसेंटेज मेंशन है, it just keep that amount of as a reserve and then whatever is left from the initial deposit, जो भी आपने डिपॉजिट करा है उसमें से जो बच जाता है पैसा वो लोन के तौर पे आपको दे देता है. ओके, एंड व्हाट हैपन हियर, ये क्या है आपकी इकोनॉमी जहां पे सिर्फ बैंक्स वर्क कर रहे हैं, नो कैश इज देयर. ओके, सो तो ये चेक के थ्रू होता है, आपके डिपॉजिटर के उसमें बोरोवर के अकाउंट में ही आ जाता है एंड द क्रेडिट द लोन अमाउंट इन दिस अकाउंट. ओके, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट. नाउ हाउएवर बैंक्स कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग. जो मैंने आपको बताया था कि बैंक जो है आपको जितना भी डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट वो लोन की तरह यही यूज कर सकता है. It is legally compulsory for the banks to keep a certain minimum fraction of the deposits as reserve. That I was telling you. That is, जो भी आपने 1000 फॉर एग्जाम्पल आपने डिपॉजिट किया तो 1000 टोटल वो लोन की तरह आपको नहीं दे सकता है, बैंक यूज नहीं कर सकता, बट इट हैज टू केप्ट a certain percentage, a minimum fraction of their deposits as reserve. That is known as LRR. The fraction is called the LRR, that is legal reserve ratio or reserve deposit ratio or reserve ratio. Okay, and it is fixed by the central banks. Banks do not keep 100% reserve against the deposits. Okay, they keep reserve only to the extent indicated by the central bank, right? So I hope now it is clear. Now primary deposits and secondary deposits, you can just go through it. Primary deposits are the cash deposits of the people with a commercial bank in different deposits accounts such as saving account, current account, term deposit. ये जो हम करते हैं, that is known as the primary deposits. Okay. On the other hand, secondary or derivative deposits are those deposits which arise due to loans given by the banks to the public. यानी कि जो बैंक हमें देता है, okay, पैसा,
which arises due to loans के तौर पे given by the banks to the people, that is known as a secondary deposit. Okay, the difference पता होना चाहिए. Sum total of primary and secondary deposit is equal to total demand deposits of the commercial banks. Okay, तो दोनों का जो sum होगा वो आपका हो जाएगा total demand deposit, that is secondary and primary deposit का. It must be noted that primary deposit indicates saving of the depositors with the bank, while secondary deposit indicate borrowings of the depositors from the bank. Okay, now commercial banks can create secondary deposits by way of loan many times more than their cash reserves. So secondary deposits are always more than the primary deposits. Okay, so now we are going to discuss here how this money creation takes place with the help of an example. Okay, now here you have the table, you can take the screenshot. Okay, now here we have to make 4 columns: first column, second, third and fourth. Okay, in the second column you have to mention the number, the deposit, okay, the amount that is going to be deposited, then loan, and then cash reserve ratio, or you can say the legal requirement, legal reserve requirement. Okay, then what you will do here, for example, initial deposit, यानी जो पहला deposit हमारा था, that is वो 1000 rupees. Okay, now 1000 rupees में क्या था, LRR, that is the percentage that has to be kept by the commercial bank, okay, as a reserve, is 20%. for example, तो 1/20% का क्या हो जाएगा यहाँ पे, that is a आपका 1000 का 20% आया 200. Okay, so you will do what, 1000 minus 200. Now what the amount is left is taken as the loan. Okay, 800 आपका लोन हो गया. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, देर इज नो कैश. ओके, नो कैश लीकेज, ओनली द बैंक, एंड इट इज बीइंग doing what, that is with the help of all the payments are made through checks and all receipts are deposited in the banks. Okay, so it means 800 is again to be used as a deposited. Okay, now 800 का क्या होगा, 800 का 20% again हम calculate करेंगे तो you will get 160. Then 800 minus 160 you will get 640 as loan. फिर ये क्या होगा, 640 अगेन इट इज टेकन एज अ डिपॉजिट, वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा बैंक में. सो 640 का क्या आ जाएगा आपका, 20% इज 128. यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ आफ्टरवर्ड्स. ओके, देन 128 क्या करेंगे हम, 640 में से 128 माइनस कर देंगे तो जो पैसा अमाउंट हमारा बचा वो आ गया फिर एज लोन. एंड दिस विल टेक प्लेस, ये क्या होगा, राउंड्स चलते रहेंगे टिल द डिपॉजिट, द इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू दैट इज कैश रिजर्व. Okay, fine here. And this process will continue and will end where LRR is equals to initial deposit. Okay, LRR is equals to initial deposit, that is 1000. तो ये आपका ये process चलता रहेगा, rounds चलते रहेंगे. Now how you're going to calculate it, I'll just discuss. First we are going to discuss this. Okay, ये जो ऊपर आपका मेंशन है पॉइंट्स, ये हम देख लेते हैं, यही इसका टेबल को एक्सप्लेन किया गया है. सपोज इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट इन बैंक्स इज 1000. ठीक है, एंड LRR इज 20%. तो ये 1000 आपका ये रहा, और इसका ये परसेंटेज है आपको केप्ट करना एज अ रिजर्व, that is 20%. Okay, it means the banks are required to keep only 200 as cash reserve and are free to lend 800. आपको आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा. सपोज दे लेंड 800, बैंक्स डू नॉट लेंड दिस मनी बाय गिविंग अमाउंट इन कैश, कैश में नहीं देता है. दे ओपन द अकाउंट्स इन द नेम्स ऑफ द बोरोवर्स हु आर फ्री टू विथड्रॉ द अमाउंट वेयरएवर दे लाइक. ओके, तो यहाँ पे कैश का आपको कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, राइट. नाउ सपोज बोरोवर्स विथड्रॉ द एंटायर अमाउंट दैट इज 800 फॉर मेकिंग पेमेंट्स. उन्होंने विथड्रॉ कर लिया. As all the transactions are routed through the banks, the money spent by the borrowers come back into the banks in the form of deposits. Okay, तो 800 इसलिए यहाँ पे आ गया, right. Now the money spent by the borrowers come back to the banks in the form of deposits account of those who have received this payment. Okay, so it will increase the demand deposits of banks by 800. तो यहाँ पे demand deposits क्या आ गया आपका, वापस money वो आ गया बैंक में, बिकॉज कैशलेस इकोनॉमी हम मान के चल रहे हैं. सो 800 आपका यहाँ पे आ गया डिपॉजिट में. नाउ अगेन दिस 800 में से आपका 20% चला जाएगा LRR में, और जो बचेगा वो एज अ लोन दे दिया जाएगा. देन दिस अगेन अमाउंट इज गोइंग टू बी टेकन एज डिपॉजिट, एंड देन इसमें से 20% आपका चला गया यहाँ पे LRR में, and then जो amount बचा 600 minus LRR, that is 128, you will get 512. Okay, so with new deposit of 800, bank keeps 20% as cash reserve and lend the balance 640. Borrowers use these loans for making payments. जितना भी लोन आता जाएगा उसका पेमेंट करेंगे, अगेन वो क्या होगा, उस अकाउंट में आ जाएगा, जो रिसीव करेगा वो बैंक में जमा कर देगा. दिस टाइम बैंक डिपॉजिट राइज बाय 640. ओके,
तो ये सिलसिला चलता रहेगा। द डिपॉजिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड बाय 80%। यहाँ पे डिपॉजिट क्या हो रहा है आपका 80% से बढ़ रहा है, और यहाँ पे कैश रिजर्व कितना मेंटेन करना है हमें, इसका डिपॉजिट्स का 20%, राइट। आई होप इट्स क्लियर। Cash reserves also go on increasing each time by 80% of the last cash reserve, यानी कि जो लास्ट कैश रिजर्व होगा उसका 80% यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। Now, deposit creations come to end when total cash reserve become equal to the initial deposit. Now you can see जहां पे entire amount कब आपका जो है टेबल फिनिश होगा, खत्म होगा, कंप्लीट होगा, when this initial deposit, जो पहला डिपॉजिट हुआ था, ये इक्विवेलेंट आ जाए आपका 1000 के कैश रिजर्व रेशियो के, राइट, कैश रिजर्व के, ओके, एलआरआर के। As seen in the table, banks are able to create total deposits of 500 with the initial a deposit of just rupees 1000. It means total deposit becomes 5 times of the initial deposit. 5 times is nothing but the value of multiplier. अब 5 times कैसे निकाला है वो मैं भी आपको बताती हूँ। That is the money multiplier का फॉर्मूला है आपका, money multiplier is equals to 1 upon LRR. ओके, तो 1 upon क्या हो जाएगा 20%। ओके, जब आप 1 upon 20% करेंगे then you will get the amount that is 5 times. ओके, तो 5 times क्या हो जाएगा, जो 1000 हमारा इनिशियल डिपॉजिट था उसको हमने मल्टीप्लाई करा आपको एल आर आर से, तो दैट इज 5%, so you will get 5000 as the money multiplier. अभी पीछे मैं आपको इसके एग्जाम वो दिखा दूंगी फॉर्मूलाज भी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ना मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर, इसको किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं। मनी मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज, यानी कि जो टोटल डिपॉजिट है वो कितने नंबर से इंक्रीज कर सकता है ड्यू टू अ गिवन चेंज इन डिपॉजिट्स। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो। सो इसका जो रिलेशनशिप होता है मनी मल्टीप्लायर विद द लीगल रिजर्व रेशियो, दैट इज LRR, इज इनवर्सली। इट मीन्स जब मनी मल्टीप्लायर आपका इंक्रीज करेगा तो आपका लीगल रिजर्व रेशियो डिक्रीज करेगा, एंड जब मनी मल्टीप्लायर आपका डिक्रीज करेगा तो आपका लीगल रिजर्व रेशियो इंक्रीज करेगा। ओके, मीन्स इनवर्स डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स मनी मल्टीप्लायर इज द प्रोसेस by which the commercial banks create credit based upon the reserve ratio and initial deposit. It is calculated as, जो मैंने अभी बताया ना कि 5 times कैसे निकला, so this is the formula, money multiplier or credit multiplier or deposit multiplier is equals to 1 upon LRR. In the given example आपका 20% था, right? LRR आपका कितना था देखिए यहाँ पे, that is 20%. Okay, now how are we going to calculate? मनी मल्टीप्लायर आप ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR, ये आपने लिखा फॉर्मूला, एंड देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट 20%, 1 अपॉन 0.2 कर दो या 20% कर दो, यू विल गेट 5 आंसर। ओके, इट सिग्निफाइज दैट फॉर एवरी यूनिट ऑफ मनी kept as reserves, banks are able to create 5 units of money. The value of money multiplier is determined by LRR. Higher the value of LRR, जितना ज्यादा होगा आपका LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, lower होगा value of money multiplier and less money is created by the banking system. Okay, so this is the whole process. Now if suppose आपका initial deposit अगर आपको दिया है क्वेश्चन में 1000 है और LRR is given is 12.5%, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अपॉन 0.125% में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे 12.5% या 0.125, तो आपका आ जाएगा 8 times। ओके, 8 times का मतलब क्या है, 1000 into 8, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल डिपॉजिट्स यानी कि आपकी 1000 थी इंटू मनी मल्टीप्लायर यानी कि 8, सो यू विल गेट 8000 करोड़। ओके फाइन, तो मनी मल्टीप्लायर आपका कितना आ जाएगा 8 times आ गया, एंड टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना टोटल क्रेडिट कर सकते हैं, दैट इज 8000 करोड़। ओके, डिफरेंट फॉर्मुलाज आर आल्सो गिवन हियर। मनी मल्टीप्लायर का 1 अपॉन LRR मैंने बता दिया। टोटल क्रेडिट क्रिएशन अगर आपको पता करना है तो या आप इनिशियल को प्राइमरी और डिपॉजिट से या प्राइमरी डिपॉजिट अगर होगा तो उसको मनी मल्टीप्लायर से कर सकते हैं, और टोटल क्रेडिट क्रिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1 अपॉन LRR। तो ये डिपेंड करता है जैसे आपका क्वेश्चन आएगा, राइट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। Now initial deposit अगर आपको कैलकुलेट करना है then total deposits upon money multiplier, and money multiplier if you want to calculate then total deposits upon initial deposit depending on the situation, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। ओके, सो बेसिकली हमने जो भी एग्जांपल पढ़ा है टेबल के ऊपर, टेबल का, तो वो उसमें क्या है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट विद द हेल्प ऑफ कि इजी एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। ओके, ताकि आप इसको आसानी से इस चीज को कर लो।
Okay, first of all, here is money creation. Okay, or you can say here money multiplier or credit creation. Okay, how are you going to give the answer? The first step is meaning. मीनिंग आपको मैंने बुक से बता दी है. You will write the meaning. Then second is assumptions. मैं assumptions आपको थोड़ा सा easy language में कर देती हूँ. Okay, assumptions आपका पहला क्या है? That is आपका ये माना जाएगा all the transactions are routed through banks. Okay, then second क्या है आपका? No cash leakage. ये कैश का कोई भी काम नहीं है, यहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी है. No cash leakage. People deposits entire amount in bank. जितना भी उनको पैसा मिलेगा वो अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे. entire amount in bank. Then third is what? The entire amount sorry, the entire monetary and banking system is one unit which is termed as bank. Okay, देन एक और आप इसमें assumption अपने लिए याद करने के लिए कर लिएगा. द लोन इज इक्वल्स टू विड्रॉल. ठीक है, जितना भी लोन होगा वो विड्रॉल में आ जाएगा. दैट मीन्स इट मीन्स whatever the amount is left after legal reserve requirement is fully given as loan. ठीक है, जितना भी अमाउंट बचेगा उसके बाद then loans are, ये जितने भी assumptions है मैं उसका मीनिंग तक आपको बताई दे रही हूँ. ठीक है, loans are redeposited in the banking system. जितना भी मैं लिखवा रही हूँ ना, ये सब आपके पॉइंट्स अपने आप सब चीजों को क्लियर कर देंगे. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस. Okay, you are going to make this here the table. ये ऐसे ही बनना है, राइट? ये राउंड्स हो गए आपके, ये डिपॉजिट्स हो गए, ये आपका लोन्स हो गया एंड दिस पार्ट. ओके, ये टेबल आपका बुक में भी बना हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो.
Now here you can write here rounds this table, okay? Then deposits, then loans, and then LRR. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20% अगर लोन है, ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया इनिशियल डिपॉजिट। आपका पहले में शुरुआत में आपने कितना डिपॉजिट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने अमाउंट किया डिपॉजिट 1000, ये मेरा इनिशियल डिपॉजिट है, और इसमें 20% में जब कैलकुलेट करूंगी तो आ जाएगा 200। 1000 into 20 upon 100, so you will get 200। अब 1000 में से मैं क्या करूंगी, ये लीगल रिजर्व माइनस कर दिया तो मेरा आ गया 800 लोन्स। मैंने 800 लोन क्या करूंगी, मैं यहाँ पे पे डिपॉजिट में आ जाएगा सीधे। मैंने एक उसमें लिखा है ना ऊपर कि दैट इज आपका जितना भी लोन है इज इक्वल्स टू विड्रॉल। डिपॉजिट होके पे विड्रॉल आ जाएगा, ठीक है। देन LRR दैट इज 800 का कितना आ जाएगा आपका 20%, 800 इंटू 20%, ये आपका आ गया 160। okay, so this is going to be 160, then 800 minus 160 you will get 640। now 640 ये लोन है आपका, फिर ये आ जाएगा आपका एज अ डिपॉजिट हियर यहाँ पे, तो 640 का आप क्या हो जाएगा आपका, अगेन 640 into 20%, so you will get 128। okay, and then 128 इसमें से माइनस कर देंगे, then 512, and then यहाँ पे आ जाएगा आपका 512, and this will keep on going till आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मनी मल्टीप्लायर is equals to 1 upon LRR is equals to 1 upon 20%, so you will get how much here, 5 times। okay, तो 5 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज आपका जो ये 1000 था इनिशियल डिपॉजिट, जस्ट वेट, ये था आपका 1000 इंटू 5 इक्वल्स टू 5000। ओके, तो जब ये आपका डिपॉजिट जो इनिशियल डिपॉजिट है वो आपका कितना आ जाना चाहिए, LRR के बराबर, जहाँ पे मैंने कहा था लोन इज इक्वल्स टू यहाँ पे। ओके, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड विल एंड वेयर LRR इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट। और ये मेरा डिपॉजिट कितना यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा 5000, जो मैंने ये कैलकुलेट करके रखा है, राइट। now 5000 minus 1000 you will get 4000 as the loans। I hope now this table is quite clear now। यहाँ पे ये आपके राउंड्स आ जाएंगे। ओके, इनिशियल डिपॉजिट राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है, राउंड 4 एंड सो ऑन, और भी आते चले जाएंगे राउंड्स, ठीक है, टिल हियर इनिशियल डिपॉजिट के इक्विवेलेंट आपका ये LRR ना आ जाए, इसका सम। ओके, एंड देन when you are going to deposit से जब आप LRR माइनस कर दोगे you will get the amount of loan। I hope now it's clear, please take the screenshot। okay, मनी क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी क्रिएशन का ये प्लीज आप नोट्स देख लीजिएगा, assumptions हैं सब मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। एंड नाउ these are the table, this is the table। okay, I hope now it's quite clear। okay, now explanation of the table I'm going to just write it here very quickly। okay, अगर ये आता है इस तरह का क्वेश्चन तो प्लीज आप इसी तरह लिखेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल, जो टेबल बनाया था उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल। जो अभी मैंने टेबल बनाया था रब कर दिया उसने, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, राइट। एक्सप्लेनेशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट हियर, सपोज इनिशियल डिपॉजिट इन banks is 1000। okay, and LRR is 20%। okay, it means
banks are required to keep only rupees 200, okay, as reserve and lend rupees 800. देखो बहुत सिंपल इंग्लिश में मैं लिखवा रही हूँ sentences, okay, you can easily understand the whole table. With the new deposit, with the new deposit क्या हो गया? 800 आपका, okay, rupees 800, okay, banks keep 20% as LRR and lend the balance rupees 640. Okay. Now third point में क्या कर सकते हैं हम? The deposits keeps on writing पे मत जाना, समझ जाना, इसलिए मैं बोल रही हूँ on increasing in each round by 80%, right? Of the last, जो लास्ट वाला राउंड डिपॉजिट होगा ना उसी से बढ़ेगा. Okay, and fourth point is here, deposits creation कब खत्म होगी? Comes to an end when, जब क्या हो जाएगा? आपका total cash reserve becomes equal to the initial deposits. Okay, so in short हम कह सकते हैं it ends when total reserves equals to initial deposits. So this was the explanation of the table. Hope you like this, and it's very easy to understand the table also, and how to you're going to make the table, how you're going to explain everything, the assumptions, meaning, then explanation of the table I have already given you. Hope you like this, and in the next video we are going to start the some, you can say, the explanation of the central bank. Okay, so keep learning, keep enjoying, and thank you for watching.